Okay, so without wasting time, let us move. Let us say this is the question we were doing, and what will be the solution to this? A closed system undergoes a change of state by process 1:2, for which this is this. Now this is a process, it is saying. It can be anything, and the Q heat is given and the work is also given. So it is a closed process. I can use the first law of thermodynamics, and the first law of thermodynamics is du plus dw. You know the symbols, and here we will substitute the values. Now the system is now returned to its initial state by a different path. So one should be like this, another should be like this. This is 1 and 2. तो ये रास्ते हो गए उसके, ठीक है ना, 1 से 2, 2 से 1, फॉर विच द हीट इज दिस. तो इन फर्स्ट केस 2 things are given. So delta Q is plus 10 du and work is minus, so du will be coming out to be 15 joule here. So now I will use this du in our second equation. This is my case number 1. So what about case number 2 now? Case number 2, I would be using this equation again. Okay, now dq is given as minus 3, du is 15 plus dw. So what is the work done by the gas? So we will see it, and work done by the gas will come out to be minus 15 and minus 3, that will be minus 18 joules. Okay, there is a problem here. We have to see. The closed system undergoes a change of state, process 1 to 2. Now Q is 10 joules, so it means like heat is added into it and work done is negative. Here is a problem. Work done is negative. Work done cannot be negative here. How can this work done be negative? This will not be negative. I believe students mistakenly, the question has been taken from, I suppose, your chemistry chapter of thermodynamics. Maybe many a times the students, they put questions like this only. So they are posting chemistry questions in physics group and all that. So I think there is an error here. So what will be happening? Okay, there is this image. So I think it should be dq is equal to du plus dw. This is in physics, and this, as per physics is concerned, this should be plus 5. Because when heat will be added into the system, it is taken positive in physics. When the heat is added, always the work is done by the system, it will be positive. So I think this is definitely seems to be from chemistry. Otherwise the answer could not be wrong here. So coming back again, so du should be 5 joules. Now dq is equal to du plus dw, and in our second case this is minus q. Only work done is in a reverse fashion, and du is 5, so this will be plus dw. So this dw, you can see, is coming out to be minus 5 and minus 3, minus 8 joules. Now this is from the physics point of view, and because I think this is the question is taken from chemistry, so your first law of thermodynamics will not be dq is equal to du plus dw. It will be dq is equal to du minus dw. So everything will fall in place, and this will be minus joule. In physics it will be minus 8. For chemistry it will be plus 8. So A is the right option, and this question is from chemistry, not physics. Okay, please take care of this thing next time whenever you are putting these kind of questions. Okay, let us now move to our next question. Okay, so this is about the inductance, and let us find it. Let us find it. A bulb of resistance 10 ohm. A bulb of
the resistance 10 ohm connected to an inductor L. So what will be the circuit? The circuit will be like this. This is the resistance, this is inductor, and in series with an AC source. With an AC source marked 100 volt and 50 hertz. If the phase angle between the voltage and the current is this. Now the phase angle between the voltage and the current is given as pi by 4 radians. Find the value. तो L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई, ठीक है। तो L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। तो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस गिवन है और ये L मुझे गिवन है, ये फाइंड करना है। रेजिस्टेंस R इज गिवन टू मी, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट impedance triangle. So impedance triangle will be somewhat like this, okay, and this will be R, this will be XL omega L, and this angle phi is given as pi by 4, so this will be 45 degree, so it means R should be equal to XL. So tan pi by 4 is equal to 1. This implies XL should be equal to R. तो XL की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई। ओमेगा L is equal to R. ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 pi f into L by this. तो इसको अब हम यहाँ पर लेकर जाते हैं। So what are we supposed to find? L. तो L की वैल्यू आएगी मेरी R10 डिवाइडेड बाय 2 into pi into f. फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होनी चाहिए 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी शुड बी इन हर्ट्स। तो ये आ गया मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 100, ओके, दिस इज L. सो L इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 पाई हेनरी. सो दिस इज द इंडक्टेंस. So this is how you will do it, and there should be no problem here. So if you are facing any problem in this question, you do tell me. With this, your question is now answered. Okay, impedance triangle. So let us now move to our next question. Okay, there's no comment here. We have to first see whether this method is okay with us or not. So this is another question. Let us try this now. Okay, now the current is 2 ampere is flowing in the given LR circuit. So the current is given as 2 ampere. Well, this is AC, so you can't show the direction. Find the voltage across the AC source and the impedance of the circuit. So impedance will be easy, but okay, fine. This is only and only the voltage is given here. So this is a really different question. Let us find. You see the voltage is given here, so you can find the resistance here by V is equal to I into R. So voltage is 100 equal to I into R. So I is given as 2. तो ये हो गया मेरे पास 2 और ये हो गया R. तो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया कि रेजिस्टेंस तो जी 50 ओम होना चाहिए. तो रेजिस्टेंस विल बी 50 ओम्स. ओके, सो रेजिस्टेंस इज 50 ओम्स and XL I need to find, that will be omega L. The problem is I don't know omega, I don't know L, I know nothing about it. Okay, so we can directly find the XL value by using the Ohm's law for the inductor. Now Ohm's law for the inductor will be VL is equal to I into XL. So we will take it 240
is equal to I to XL. We can find XL from here, so XL will be 120 ohm. Now you know the resistance and you know the XL, so you can find the impedance. Now impedance will be given by this will be quite difficult for calculating it, and it would be okay, this comes out to be easy. So this will be Z. So impedance will be, this will be 13, and 13 multiplied by 10, 130 ohms. So our answer is 130 ohms. Okay, so we have completed it. तो बेटा आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया है. 130 ohms, that will be the impedance. You can see. So this is how we will find it. लेकिन अभी भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें फाइंड करनी है जो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस लगी हुई है, ये कितनी लगी हुई है. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड. तो इस केस में हम इम्पीडेंस ट्रायंगल की तरह जो हमारे पास ट्रायंगल बनता है वो हम देखेंगे. ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर में करंट लैग करता है. सो यू कैन से दैट दिस इज VL एंड दिस विल बी VR. This will be the total voltage V0. So we want to find the V0. So let us find it. V0 will be equal to the square root of this 240 square plus so it should be taken as yes, this will be absolutely right. We need to find it. It's better that if I would be having a calculator. No, wait a minute, let me have the calculator. Okay, my calculator is not coming. Okay, no problem, we have to do it. Okay, let me try. Anyways, so 240 square plus 100 square, that will be equal to 6760, and the square root of this is 260. So our answer is absolutely right. We are getting 260 volt. So answer is absolutely correct. Okay, I know there is a this V0 is equal to and that is what is the question. Okay, that is what is the answer here. So we have found the answer. This is 130 ohms and this is 260 volt. So with this we have cleared this thing. Okay, so let us now move to our other question. So this is another question. Let us try this now. Wait a minute, this setting is very difficult. Okay. So now an alternating EMF of 110 volt is applied. An alternating EMF of 110 volt so is applied to a circuit containing resistance and the inductance. So there is a resistance and inductance. This is the alternating current. So the EMF here is this. This must be the RMS value, that is why it is given in this way. Otherwise omega की terms में होता. Is applied to the circuit, resistance is 40 ohm.
एंड इंडक्टर दिया नहीं हुआ, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल दिस, तो फाई आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4, सो tan ऑफ फाई इज दिस। तो एक तरह से आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल का फाई दिया हुआ है, तो दिस विल बी दी z, this will be the xl and this will be taken as r in the ratio, okay. So this is the impedance triangle, phi आपको पहले से given है ना। find the inductive reactance, तो inductive reactance आपको find करना है, impedance and others in the circuit, if l is this find the frequency। तो हमें यहाँ पर अब ये सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रेशियो में आ रहा है, तो हमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस तो 40 है, तो अगर ये रेजिस्टेंस 4 की जगह पर 40 है तो दिस शुड बी 30 एंड दिस शुड बी 50। तो आपके पास ये आंसर तो आ गया 30 ओम्स एंड 50 ओम। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद रह गया आपका फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो करंट के लिए मुझे इंपीडेंस चाहिए था, तो इंपीडेंस तो 50 है, तो करंट मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ कि भाई जितना भी आपने आरएमएस वैल्यू लगाई इंपीडेंस पे डिवाइड कर दिया, टू 2.2 सो ये वाला भी आंसर आ गया। अब हमारे पास बचता है क्या, इफ L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि L आपको गिवन है 0.1 हेनरी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा यहां से निकाल लेते हैं, तो XL की वैल्यू अब आपको पता है कि मेरे सर्किट में 30 होनी चाहिए, सो दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा L। और मुझे ओमेगा फाइंड करना है, द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय L, दैट इज 0.1, so this should come out to be 300 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 300 रेडियन पर सेकेंड बन गई बात आपकी, ठीक है। तो ऑल दी ऑप्शंस एंड ऑल दी आंसर्स आर मैचिंग हियर, इट इज नाउ कंप्लीट। सो लेट अस नाउ मूव टू another doubt. This doubt we have completed. Okay, so there are students, those who are doing this, very good students. For this I would like to appreciate you because this is what gives you a better practice. Okay, these are the questions जिसको पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स ने चुन के यहाँ पर भेजा है। तो ये क्वेश्चंस आसान नहीं होते, तो अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो दिस इज रियली वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि ये गन वाला क्वेश्चन ही है जो इन्होंने सॉल्व कर दिया है। सो दिस इज ओवर, दिस इज द ऐप बेटा, यू कैन सी, एंड दिस इज द ऐप फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड प्लीज़ ज्वाइन दिस ऐप बिकॉज इस पे हमारी बहुत मेहनत लगी है। और अगर आप ये इसको ज्वाइन कर लेते हो तो यू कैन वी कैन वेरी वेल कंडक्ट द फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। And this free online test series is starting this Sunday 8th November, that is tomorrow. Tomorrow the test will open at 10 a.m. up to 10:30, so you must start your test from this timing, and the test will be 3 hours long, okay, for NEET. So okay, there is my image here. Test will be 3 hours long and it is based on the NEET pattern, so 45 plus 45 plus 90 questions will be there, okay. So this brings you to a big practice, and if you are preparing from your home
this becomes even more important. I am now giving you free doubt classes and there is free online test series, nothing like that. Okay, chalo, let us move ahead. So this is done. 1.59 this. A pure inductor has the reactance of this. Okay, a pure inductor has a reactance at 200 Hertz frequency, AC line. What would be the reactance at 50 Hertz? So the reactance is actually the omega L. तो बेटा ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर आपने कहीं पे इंडक्टर लगाया है तो उसका रिएक्टेंस जो है उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है। अगर मेरे पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो आप उसको कहीं पर भी ले जाओ, जितनी मर्जी बैटरी लगाओ, डीसी लगाओ या एसी लगाओ, it will remain 10 ohm. But as per the inductance is concerned, capacitance inductance or inductance of inductor, in both of these things, ठीक है, जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी रिएक्टेंस, सॉरी नॉट इंडक्टेंस, रिएक्टेंस जो वैल्यू आएगी दैट विल वेरी, दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और ये हो गया ओमेगा एल। तो हमें तो भाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में बात करनी है तो इसको ये लिखना पड़ेगा। सो इट इज गिवन दैट इट इज 22 if the frequency is 200. From here I can find L, and he's saying that if the frequency is 50 Hertz, same inductor, so what will be the reactance R? So this is what we need to find. So what we do, we will divide it. So R divided by 22 should be equal to 50 divided by 200. So this will be 1 by 4, 22 by 4, 11 by 2, so it will become 5.5. So there it is, your answer 5.5. Okay, so dear students, with this I am going to close the today's video. So I plan to conduct nearly half an hour class for doubts here. I will try to solve as many doubts as possible, and gradually we will try to conduct classes every day, but presently it's not certain. So this class that I have conducted, इसका जो रीज़न है ना वो ये रीज़न है कि भाई आप एक बार इस वीडियो को देख लो और उसके बाद आप मुझे फीडबैक दो कि सर ये मेथड आपको कैसा लगा। अगर आपको ये चीज़ ठीक लग रही है तो आई कैन कंडक्ट मोर सच क्लासेस। अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, you need 3 things to crack your exam. Number 1, lectures. Number 2, doubts. Number 3, tests. टेस्ट तो आपको मेरे प्रोफेसर वरुण नाम के जो ऐप है जो एंड्रॉयड पर है, इसमें आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है। लेक्चर्स आप अनअकैडमी पर ले सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अनअकैडमी पर आई एम टीचर देयर, सो आई कैन टीच यू। यू कैन टेल मी व्हाट द चैप्टर यू वांट टू लर्न हियर इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, और अनअकैडमी पे मैं आपको वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस क्रिएट करवा के आपको वहाँ पर टीच कर सकता हूँ। तो लेक्चर की प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। रह गई आपकी डाउट की प्रॉब्लम, और यही आपकी एक मेजर प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा कठिन था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर ये वाला मेथड, जिस मेथड से आज हमने क्लासेस कंडक्ट की है, अगर आपको ये ठीक लगता है आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। आपका ये जो थर्ड प्रॉब्लम है डाउट्स का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से चलें तो आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम दी होम इटसेल्फ विल बिकम वेरी इफेक्टिव। लेकिन मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, आपकी तरफ से मोटिवेशन चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ एंड दैट इवन आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी कॉस्ट, और अगर फिर भी हमें उतना फीडबैक ना मिले, रिस्पॉन्स ना मिले, रिस्पेक्ट ना हो उतनी, तो अच्छा फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। सो आफ्टर सम टाइम द टीचर विल स्विच ऑफ। स्टार्टिंग में मेरे पास 4 टीचर थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, चारों के लिए, एंड यू कैन सी देयर आर 4 ग्रुप्स फॉर टेस्ट सैंपल, but slowly gradually all have left,
एंड ओनली आई एम लेफ्ट फॉर फिजिक्स। सो अगर आपकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमें यहाँ पर एक बार मुझे यहाँ पर फीडबैक ज़रूर देना। सो दिस इज़ प्रोफेसर वरुण, ऑल द बेस्ट, बाय।